welcome to the final session of the Symbiosis Literary Festival. And the topic of discussion in this session is regional media and public opinion, an exploration of the role of Hindi news media in building public opinion, both politically and socially. In this session, we have Dr. Sreeram Gopalkrishnan in conversation with Sri Rajat Sharma. But before that, the Pro-Chancellor of the Symbiosis International University, Dr. Vidya Iravtekar, is going to say a few words about Sri Rajat Sharma. I invite Dr. Vidya Iravtekar. Ma'am. Yeah, thank you very much. I'm not going to say a few words about Mr. Rajat Sharma because he is one of the most popular faces on television, especially from the journalism domain. But I just want to thank him for accepting our invitation, Rajatji. Unfortunately, last time when you were in Pune, I was traveling out, so I could not meet you. But we are all your great fans, and your program is something that I think over generations people watch and admire you for your very gutsy questions that you ask. And I think this is what the journalism students and even other students of the other disciplines from the university need to imbibe a very strong character, a character with great conviction and dedication to your profession. And you just don't feel scared of any VIP who's sitting in your courtroom, as I would say. And this really brings out the truth and is also an entertainment for many of us. But this is something, I think it's a great learning from the journey that you have gone through and the kind of programs that you conduct. So I think it's all about how great people become great. And I must say that all of us here in Symbiosis respect you, admire you, and we hope that you can come here more often to give some classroom lectures on this journey of your life, so that there will be such a great learning for all our students here at Symbiosis. So once again, I welcome you to this literary festival. As I said in my welcome address yesterday, that literary festivals are held in plenty all across India and of course outside India. The most popular one is the Jaipur Literary Festival, but there are several others that really impart great knowledge. But I think there would be very few universities in India that would conduct literary festivals, and it's all about a liberal education that we want to provide and not really tunnel views of a particular subject that our students are studying in, but give them diverse opinions, diverse knowledge, so that they become holistic individuals, great citizens of this country and eventually great citizens of this world. So I'm sure the last 2 days must have been extremely enriching. They were enriching for me with the diverse topics that we went through. So much of learning, so much of knowledge generation. I would say it was a literary treat for the last 2 days for all of us. And thank you, Rajatji, once again for having accepted our invitation and being here with us. Thank you. I believe we have a video about our stellar guest this evening. Can we have the video, please? Rajat Sharma, a legendary figure in the world of media, is best known for hosting the immensely popular, iconic show, Aapki Adalat. नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है. Which has captured the hearts of audiences worldwide for an astounding 30 years. Rajat Sharma, the man who wields his questions like a magic wand. अगर कभी अडानी का बलून फटा तो सारे बैंक बर्बाद हो जाएंगे. Interacted with renowned personalities from both India and around the globe with an infectious smile. His courtroom has witnessed the interrogation of celebrities from every walk of life. A tradition that continues to captivate audiences to this day. The global popularity of Aapki Adalat and its host Rajat Sharma is reflected in his world #1 position among TV news personalities on Twitter with an astounding 10.8 million followers. Rajat Sharma is a masterful interrogator who takes you on a journey like no other. He has dared to question over 1,000 prominent personalities, from esteemed political leaders to dazzling film stars and renowned celebrities. His relentless pursuit of truth knows no bounds. देश के मुसलमानों को भी ऐसा ही भरोसा दिला सकते हैं. इस देश का कोई भी व्यक्ति
भारत माँ का कोई भी लाल, उसको वो सारे अधिकार हैं जो नरेंद्र मोदी को है। किसी को आपसे डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को तो डरना पड़ता है। With Rajat Sharma at the helm, laughter, tears, and well-kept secrets are all part of the ride. Icons, stars, and figures that ignite controversy. His guest list is an endless roster of noteworthy individuals. Aapki Adalat was already a nationwide sensation when Rajat Sharma took the helm in 1993. Over the years, it has garnered even more fame and name. With luminaries like President Pranab Mukherjee and Prime Minister Narendra Modi gracing its stage on the show's 21st anniversary. मैं रजत जी को बहुत सालों से जानता हूँ। ये इंटरव्यू करने का एक अपना तरीका है उनका। और 21 साल तक एक ही प्रकार की चीज सस्टेन करना, ये सरल काम नहीं है। और उन्होंने इसे किया। Notably, it was on this platform that all three Khan superstars, Salman, Shah Rukh and Amir Khan, appeared together for the first time on national television. The impact of Aapki Adalat is undeniable. Icons like Swami Ramdev and Shah Rukh Khan openly acknowledge how the show played a pivotal role in their rise to stardom. मेरा जिंदगी का सबसे पहला बड़ा टीवी का इंटरव्यू एक्चुअली आपकी अदालत में हुआ था, जिसकी वजह से मुझे लगता है जिस मुकाम पर मैं पहुंचा हूं उसमें बहुत मदद मिली थी। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू कहना चाहता हूं कि आपने मुझे इतना बड़ा स्टार बनाया। Former President of India, Pranab Mukherjee, urged him not to change his role. This program has manifested the strength of our democracy. And please do not change your role to be the public prosecutor of the people of India. That was, dear audience, the people's prosecutor for you. In conversation with him, we have Dr. Sreeram Gopalkrishnan. Dr. Sreeram Gopalkrishnan has many feathers in his cap. He has a PhD in mass communications, MS in communications, an MBA from NMIMS, and has attended executive programs at the Indian Oil Institute of Petroleum Management and the Mudra Institute of Communications and Advertising. From working to Fortune 500 company, Indian Oil, to joining the Symbiosis International University as associate professor, his career has been multifaceted. Presently, he is the director at Symbiosis Center for Media and Communication and a visiting faculty at Symbiosis Institute of Business Management, Pune, for film marketing. Without further delay, I hand it over to you, sir, Dr. Gopalkrishnan. Ladies and gentlemen, we have with us today Shri Rajat Sharma. It is my privilege to interact with him. I specify the word interact rather than interview. That is because interviewing Shri Rajat Sharma is like trying to compose music in the presence of A.R. Rahman or playing a cover drive in the presence of Sachin Tendulkar. So I like this word interact. Welcome to a very special episode of Symbiosis Literary Festival organized by Symbiosis International Deemed University. We have received an overwhelming response to this episode, especially among the younger generation. And we look forward to interacting with Shri Rajat Sharma. He has represented a nation. He has questioned films, prime ministers, presidents, sports stars, cinema stars, and he has done it with all grace and dignity. That is truly unique in the galaxy of news editors and news show hosts and news personalities. I'm struck by one comment by our Prime Minister, Shri Modi.
he said in an interview in a public platform, watch all the episodes of Aapki Adalat. You will not find one instance where Rajatji has made up his mind and extracting a comment that suits a particular way of thinking. In his interrogation style, he is genuinely interested in issues that is for the welfare of the people. Stop quote. That's a quote which really stays in my mind. You cannot get a higher praise than that. Nearly 2 decades ago, Shri Rajat Sharma launched India TV, which has now risen to become one of the leading Hindi news channels in the country. And every night at 9 p.m., millions tune in to watch his live news shows, where his pungent commentary takes center stage. Shri Sharma is not just a television star, he's also a respected motivational speaker, often invited to share insights in esteemed institutions worldwide, and his influence extends far beyond the screen, as he is recognized one of the most important media icons across the globe. In the realm of social media, Shri Rajat Sharma reigns supreme, and on Twitter, he has an astounding 11 million followers. In fact, Exchange for Media, an independent body, has reported that he is the most followed TV news personality on Twitter. Born into humble beginnings, Shri Sharma's merit got him into Sreeram College of Commerce. He was involved in student politics, which led to his imprisonment during the emergency. And then he entered into the world of journalism. And at a very young age, 28, he assumed the role of the editor for Outlook magazine. This was followed by editorships at the Sunday Observer and the Daily. When the schedule was announced, we were flooded with emails from public, students, and the alumni network. Many of them wanted to know about how are the famous personalities that Shri Sharma has interacted with. For that, we'll have to wait for his book, perhaps. And that is probably the first question I'll go with. Rajat Sharma ji, before we would like to know, is there a book which will talk about your experiences of some of the greatest personalities of India? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर विद्या आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी हियर and compliment you for organizing this Symbiosis Literary Festival. It's not an easy task in today's world. And I have a lot of respect for the Symbiosis as an institution world over. People admire, and people who have studied here, they have gone to places. I'm not so fortunate. I didn't get a chance to study at a prestigious institution like Symbiosis. और जो सवाल पूछ रहे हैं इनके बारे में मैं क्या कहूं, इनके नाम में श्री राम हैं, गोपाल हैं, श्री कृष्ण हैं, तो मुश्किल होगा इनके सवालों का जवाब देना. आपने पूछा बुक के बारे में. एक्चुअली बहुत साल से बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि एक बुक लिखनी चाहिए अपने एक्सपीरियंस पे, अपने इंटरेक्शंस पर, आपने लोगों के इतने सारे लोग मेरी जिंदगी में आए, बड़े बड़े लोग, उनसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, वो मैं लोगों के साथ शेयर करूं. लेकिन अब तक जिंदगी ऐसी रोलर कोस्टर रही है कि किताब लिखने का टाइम ही नहीं मिलता. ये सोचना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है. पर आपको बताऊं, थोड़े दिन पहले नटवर सिंह जी मेरे पास आए थे घर पे मिलने के लिए. वो 92 ईयर्स ओल्ड हैं, इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, और ही वाज वॉकिंग स्ट्रेट at this age also.
और फिर खाना खाने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि भाई, और खाने पर बहुत सारी मैंने उन्हें अपने एपिसोड को इंटरेक्शन बताया कि धीरूभाई मानी के साथ ये मेरी मुलाकात हुई, टाइनी रॉलैंड के साथ ये हुआ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ ऐसी बात हुई। तो उन्होंने कहा कि कुछ भी करो, तुमको किताब लिखनी है, मेरे लिए लिखनी है और मेरी जिंदगी के रहते रहते लिखनी है, ताकि मैं उस किताब का फॉरवर्ड लिख सकूं। और फिर उन्होंने मेरी वाइफ को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आपकी जिम्मेदारी है कि इनसे किताब लिखाएं। तो ये 3-4 महीने से बहुत प्रेशर है मेरे ऊपर, और आज आपने और प्रेशर बना दिया किताब लिखने का। अगली क्वेश्चन है, आपका बॉडी लैंग्वेज के बारे में पूछना था। इट्स अ वेरी यूनिक बॉडी लैंग्वेज व्हेन यू आर स्पीकिंग, जब आप स्मेल कर रहे हैं, जब आप रेस्पॉन्ड कर रहे हैं ऑन टेलीविजन, it's a natural thing, or you cultivated the screen body language that you have? One, the life is not as sexy as it turns out to be, as it appears on TV. There's a lot of struggle in doing any program behind that. A lot of time, lot of effort, lot of research goes on. जहां तक अपीयरेंस का सवाल है, मैं जैसा हूं नॉर्मल लाइफ में, नेचुरल ऐसा ही टीवी पर दिखता हूं, ऐसे ही टीवी पर बात करता हूं, और उसमें कोई बनावट, कोई एक्टिंग, उसमें कोई नकली कुछ, एनीथिंग आर्टिफिशियल, दैट्स नॉट देयर. This is what I am, and this is the way I ask people in normal life also. So that's why it comes out very natural. Of course, for doing a show like this, there is a lot of effort, lot of research, lot of several nights, early mornings go behind this. So that probably brings in that kind of sharpness in it. और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी नीयत साफ है, इंटेंशन साफ है. मैं कभी भी किसी को इंसल्ट नहीं करता हूं, कभी किसी के लिए कोई ऐसी बात नहीं कहता जो उनको हर्ट कर जाए. और मैं आपके साथ ये सीक्रेट शेयर कर सकता हूं कि जब प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हो जाती है, उसके बाद मैं अपने गेस्ट से कहता हूं, कोई ऐसी चीज जो आपको लगी हो, आपके मुंह से गलती से निकल गई, अब वो अगर आप चाहें एडिट करना, मैं हमेशा के लिए एडिट कर दूंगा और कभी किसी को नहीं बताऊंगा. मेरा इंटेंशन ये नहीं कि शो में से हेडलाइन बनाना, सेंसेशन क्रिएट करना, वो चीजें फिर लंबी नहीं चलती. वेरी इंटरेस्टिंग. इनफैक्ट और एक चीज है, लॉट ऑफ पीपल, मुझे जो रिस्पांस मिला, वन कॉमन रिफ्रेन इज, एक पर्सनालिटी आए आपका प्रोग्राम में, मेनी पीपल से, hey, I never thought he was like this, I thought he was something else. And after I saw this program, now I know he is not that. This is the primary response of all the viewers that we have spoken to on what their opinion is about personality who's come to your show. Before your show, they have X view, and after your show, they suddenly have A, B, C, D, X, Y, Z view. So I think that is an important aspect of it. Before Aapki Adalat, before Shri Rajat Sharma ji and after Shri Rajat Sharma, there are two phases in every personality's life. मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल बताता हूँ. जो आपने बात कहा ये बिल्कुल ठीक है. जिसने भी ऑब्जर्व किया, बहुत सेंसिबल, वेरी इंटेलिजेंट ऑब्जर्वेशन इट इज. पिछले साल करीब 8-9 महीने हुए जब मैंने गौतम अडानी को आपकी अदालत में बुलाया. उसके पहले गौतम अडानी ने जिंदगी में कोई इंटरव्यू नहीं दिया था. उनकी लाइफ के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में कोई नहीं जानता था. लेकिन पिछले 10 साल से उनका नाम लोग हर रोज सुनते थे. लोग क्यूरियस भी थे कि इस आदमी ने इतना पैसा बनाया, सीक्रेट क्या होगा, कोई तरीका तो होगा, कैसे बने, स्कूल ड्रॉप आउट है, एजुकेटेड नहीं है, कैसे इतने बड़े बने. उनकी कहानी पूरी पब्लिक जानना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया. और जब मैंने उनसे कहा आपकी अदालत में आने के लिए, उन्होंने कहा नहीं, मैं कैसे कर सकता हूं. लेकिन जब वो आपकी अदालत में आए तो गौतम अडानी की असलियत क्या, उनकी जिंदगी है, कितने सिंपल आदमी है, कैसे परिवार वाले आदमी है, फैमिली पर्सन है, कैसे उन्होंने एक एक टुकड़ा टुकड़ा करके इतना बड़ा बिजनेस बनाया, उतने बड़े बने. इतना बड़ा बनने के बाद भी वो हम्बल है,
उनके अंदर कोई एरोगेंस नहीं है, और उनकी सक्सेस की स्टोरी क्या है, उनके इसका सीक्रेट क्या है, ये सारी चीजें उसमें सामने आई। और इसीलिए ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद, दुनिया भर में हंगामा होने के बाद में, पब्लिक माइंड में गौतम अडानी के बारे में कोई नेगेटिविटी नहीं है। ही कंटिन्यूज टू बी अ वेरी पॉजिटिव मैन, हम्बल मैन। लोग कहते हैं यार आदमी तो अच्छा है, और उसके बाद भी उन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। तो एक आपकी अदालत से ये एक एग्जांपल है जिससे लोगों को पता चला कि वाकई में वो क्या इंसान है, फैमिली कैसी है, कैसे वाइफ के साथ वो अपने कार्ड खेलते हैं, फिर वाइफ के साथ हार जाते हैं, छोटी छोटी बातें अपने, कैसे उन्होंने पढ़ाई की, क्यों वो बिजनेस में आए, क्या चैलेंजेस उनके सामने में थे, और जो आप पॉलिटिकल अटैक चारों तरफ से होता है उसको कैसे रिएक्ट करते हैं। तो एक ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ a person comes out. So Gautam Adani is a very good example to support what you're saying. Very rightly, this is a very related question that I want to ask. The availability of safe space is a natural human thing, whether it is a billionaire or a normal ordinary person. Every individual needs and has a right for a safe space when he is in public scrutiny. And related to that is there is this format where ये सब प्रोग्राम को अलग अलग नाम दिया जाता है, हार्ड टॉक और फास्ट टॉक, जैसे कि इज वेरी someone is put in pressure, and lots of these programs are coming up with visuals, जैसे उनको ऐसे कर देता हूँ, वैसे कर देता हूँ. So these things are in very different format, where the anchor is grilling, literally browbeating the guest, or ये showcases the superstar anchor interview. Mostly it is done as to put people in the dock. But आपका entire format में you give a safe space. How did you conceive of the safe space in the entire format of आपकी अदालत? एक्चुअली आपकी अदालत में मेरी कोशिश ये रहती है कि उन लोगों से वो सवाल पूछें जो पब्लिक जानना चाहती है। मैं एज ए जर्नलिस्ट, एज एन एडिटर, एज समबडी हु हैज स्पेंट 50 इयर्स इन दिस प्रोफेशन, उसकी पूछने की और उसकी जो क्यूरियोसिटी है वो अलग होगी। आम आदमी जो देख रहा है, व्यूअर, जब मैं कोई सवाल पूछूं तो उसको घर में बैठे लगे, ओ ये यही तो मैं पूछना चाहता था। उसमें बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी इंटेलिजेंस, वो ये अपनी इंटेलिजेंस और अपनी पर्सनैलिटी दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि लोग इस प्रोग्राम से फायदा उठाएं। लोगों को हम जो पॉलिटिकल लोग हैं, एंटिटीज हैं, पीपल इन पावर है, उनको हम अकाउंटेबल बनाएं। तो जब ये इंटेंशन रहती है सामने, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो भी लोग आपकी अदालत में आते हैं वो लोग ये जानते हैं कि कम से कम मैं उन्हें इंसल्ट नहीं करूंगा, कम से कम मैं उनका मजाक नहीं उड़ाऊंगा, और उनकी पर्सनल लाइफ में बियॉन्ड ए पॉइंट नहीं जाएंगे। ये एक बेसिक डिफरेंस है वेस्टर्न कल्चर का और इंडियन कल्चर का। वेस्टर्न कल्चर में ये बात है कि आप किसी का मजाक उड़ाते हैं, किसी का इंसल्ट करते हैं और लोग ताली बजाते हैं। हमारी संस्कृति ये नहीं है, हमारी कल्चर नहीं है। हम तो एक चींटी को भी रेस्पेक्ट करते हैं, हम एक एनिमल को भी रेस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, पेड़ को भी पूजा करते हैं। तो ये हमारा एक इम्बाइब हमारी कल्चर है। ऑन द लार्जर लेवल दिस इज व्हाट वी आर। वी रेस्पेक्ट एवरीबॉडी, एंड आई बिलीव एनीवन हु इज कमिंग टू आपकी अदालत has actually done something in life, has achieved something in life. So I have no right to insult anyone. I have no right to be crude to anyone. I have no right to expose anyone. My job is to ask questions, and I leave it there and let the public decide whether the person is saying what he's saying is right or wrong, is he lying or is he truthful. And ये सबसे बड़ी बात कैमरे के लिए मैं कहता हूं, कैमरे के सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता। कैमरा बता देता है कि आप, टीवी का कैमरा खासतौर से ये बता देता है कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, और आप जो पूछ रहे हैं आपकी नीयत में कोई खोट तो नहीं है। आपकी आंख, आपकी आवाज ये बता देगी कि आप बेईमानी तो नहीं कर रहे। एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कैमरा। जैसे आपने कैमरा बोला, ये इन द आपके अदालत फॉर्मेट में व्हेन द कैमरा इज लुकिंग एट यू and the person being interviewed, the camera level है,
camera angles are level. But when the public view comes, the camera is on the higher level. And when the camera is looking at the judge is at the higher level. So you are in neutral space, judge is on higher level, and the public is on higher level. So you and your person and the person you are interviewing are in neutral space. This conscious choice of camera, is it a design or is it happened over a period of time? No, it happened. It happened like this. When we started, then the public used to sit on the same platform. Slowly we realized from the camera angle, from the look of the show, actually this I have no say in this. My wife, Ritu, she's the director of the show. And she has spent more years in TV than I have. She's a trained producer, director. So it is her idea, where the judge would sit and how the set would look like, where the audience would be, what camera angle will go, whether it's the top angle. She sits in the production control room and she decides on this. My job is only to ask questions and that's it. And I don't have to worry about anything else. Only thing I have to worry about after the show, what is she going to tell me? Because she's my biggest critic. Most of the time she tells me, you could have done this better. You should have done this like this. Your opening, maybe you should have said this in this tone. So it is if it is by design, it is her design. And if it is by accident, so it is her choice. No, I must say that your presence, your questions, your body language complements fabulously with the design of the set, the angle of the camera, creating very different spaces, which is probably the reason that not just people who come for the interview go back with the sense of having said something that they also... I can share one thing with you, which not very many people know. This set on which we do Aapki Adalat, it was designed by Nitin Desai, who died recently, committed suicide in the studio. Everyone knows about him. And he volunteered. I told him that I'm going to revamp the show. We are going to give a new look. So he said, I want to do it. And he came to Delhi and the lighting was done by Ashok Mehta. Again, a very known cinematographer. These two people did it. So a lot of credit goes to these people for the way the show looks. I have a question which is very common, which is the number of questions sent by students. It is there. Number of frequency is higher. And the question is, it is about your episode with our respected Prime Minister Shri Narendra Modi. This is actually two questions. The first is, how do you interview a person who is widely acknowledged as one of the greatest orators and speakers of the time? How did you prepare for it? And the second question is, what is about Shri Modi which makes him such a formidable communicator? As far as my preparation is concerned, a personality like Narendra Modi, I'm all the time watching him, all the time studying him. उनकी speeches, उनका parliament में presence, उनका वहाँ बोलना, public meetings बोलना, ये सब हम देखते रहते हैं, उनकी activities, actions, decisions. तो as prime minister और उसके पहले वो chief minister थे, तो बहुत मुश्किल नहीं होता क्योंकि ये एक लंबी 15-20 साल की स्टडी है. और जब शो करना होता है उसके 2 दिन पहले तो फिर मैं अपने आप को कमरे में बंद कर लेता हूँ, किसी से मिलता नहीं हूँ, मैं सिर्फ उसी पर्सनैलिटी के ऊपर फोकस कर रहा हूं जो मोदी जी के साथ हुआ. आपने जो कम्युनिकेशन की बात कही, आप बिल्कुल ठीक, आपकी ऑब्जर्वेशन है. नरेंद्र मोदी इज वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिकेटर्स. कम्युनिकेटिंग विद पब्लिक, somebody can learn from him. और उसकी वजह ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी लीडर बन गए, उसकी वजह ये नहीं कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं. और लोग मोदी की जिंदगी के बारे में इतना नहीं जानते हैं. 30 साल अपनी जिंदगी के उन्होंने गांवों में, गलियों में, शहरों में भटकते हुए बिताए. वो जब आरएसएस के प्रचारक थे तो कई साल हिमाचल में, कई साल हरियाणा में, कई साल नॉर्थ ईस्ट में, कई साल उत्तर प्रदेश में, अलग अलग जगहों में, गुजरात में, उन्होंने कितने साल
लोगों के घरों में रह के, खाना मांग के खाकर, कपड़े मांग के पहन के, ये उन्होंने जिंदगी बिताई। ट्रेन में जाते थे, वो जमाना नहीं था कि जब आप हवाई जहाज में जा सकते थे, जब आप बड़े होटल में ठहर सकते थे, टूटी हुई गाड़ियां और टूटी हुई सड़कें, वो बिल्कुल जमाना और था। उस जमाने में जो उन्होंने स्ट्रगल किया 30 साल, वो उनके काम आया। कब काम आया? जब वो चीफ मिनिस्टर बने। 13 साल चीफ मिनिस्टर रहे। कोई देश का चीफ मिनिस्टर ऐसा नहीं है जो 30 साल जिसने पब्लिक लाइफ में काम किया और फिर वो चीफ मिनिस्टर बने। और देश का कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं है हमारे पूरे 75 साल की हिस्ट्री में जो 13 साल मुख्यमंत्री रहा हो, चीफ मिनिस्टर रहा हो, फिर प्राइम मिनिस्टर बने। तो ये जो दो एक्सपीरियंसेस हैं उनके, ये काम आए। और दूसरी बात, नरेंद्र मोदी इज ए लर्नर। हर दिन वो सीखते हैं, हर दिन वो नई चीज ढूंढते हैं। उनको नए नए आइडियाज बहुत पसंद है, नए आइडिया देने वाले, और वो नए आइडिया खुद भी बहुत क्रिएट करते हैं। तो ही ऑल द टाइम ही इज ट्राइंग टू री इन्वेंट हिमसेल्फ। और फोर्थ चीज जो मैं उनके बारे में कहूंगा, जो उनको बहुत अलग बना देती है बाकी पॉलिटिकल लीडर से, वो हिज इन्वॉल्वमेंट विद द डिजिटल मीडिया, डिजिटल वर्ल्ड। पहली बार जिंदगी में जो एक जमाने में डिजिटल डायरी आई थी, आपको पुराने आदमी आपको मालूम होगा, जिसमें हम वो नोट करते थे, वो बड़ी ऐसी चीज होती थी जिसको बड़ा क्यूरियसली हम लोग देखते थे। पहली बार वो डिजिटल डायरी मैंने नरेंद्र मोदी के हाथ में देखी थी, जब वो आरएसएस के प्रचारक थे। पहली बार मैंने मोबाइल फोन, उसका एक मोटोरोला का मोटा सा फोन था, उनके, वो भी मैंने पहली बार उनके हाथ में ही देखा। तो टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा वो हमें एकदम एडवांस रहे हैं। और कहां से मांग के लाते थे, किससे पैसे लाते थे पता नहीं, लेकिन तब से लेके आज तक दुनिया का जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है, ही इज एट इट। सो दिस प्रोबेबली मेक्स हिम अ ग्रेट कम्युनिकेटर। Many of our audience wants to know about you, and I remember seeing one video जिसने आपका फादर के बारे में बात किया था, और आपने आपका फादर ने बोला, when you wanted to go and see television in the neighbor's place, and your father said, instead of going to someone else's house, तुम खुद कर लो कुछ, कि you come on TV. Can you just tell us something about your parents and what were the influences of your growing up life, your formative years? I won't say parents, only father, because my mother, I really didn't get much time. When I was 7, 8 years old, I lost her. And I had very, very faint memories of her being in hospital. We could arrange for a better treatment, and she died. My father was a very, very strong man. In his earlier life, he had seen a lot of prosperity. He was a very, very successful businessman where he had a lot of money. But by the time I was born, he had lost everything. And we were 10 people, 7 brothers, sister, mother, and father, who were in a 10 by 10 room in Old Delhi in Sabzi Mandi on the 3rd floor. We had no electricity. We had no water. हम गली के कोने पे एक नल था, उस नल पे जाके नहाते थे, और 2 बाल्टी पानी एक माँ के लिए, एक बहन के लिए लेके अपने घर पे आते थे। उसको दरवाजा बंद करके एक साड़ी टांग के उसके पीछे वो नहा लेते थे। उसी कमरे के कॉर्नर में एक चूल्हा था जिसपे वो खाना पकता था। तो सब कुछ वही था। पढ़ने के लिए मैं रात को रेलवे स्टेशन पर जाता था। इतनी तकलीफ थी, लेकिन ऐसी तकलीफ में भी मेरे फादर वो ताकत बने। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन छोटी छोटी बात कहते थे जो आपको जिंदगी में लड़ने के लिए तैयार करते थे। एक दिन उन्होंने पूछा, क्यों इतने उदास हो, आंख में आंसू क्यों है? तो मैंने कहा, आप क्या बात कर रहे हैं, खाने को रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, अच्छा स्कूल नहीं है, और आप कह रहे हो कि उदास क्यों? उदास नहीं तो क्या हो? तो उन्होंने कहा, देखो भाई, अच्छा स्कूल होता, पैसे होते, कपड़े होते, अच्छा खाना मिलता, गाड़ी होती, बड़ा घर होता, तो खुश रह लेते, कौन सी बड़ी बात थी? चैलेंज तो यह है कि गरीबी में, अभाव में, परेशानी में, संघर्ष में, स्ट्रगल में, इसमें खुश रह के देखो। उनकी ऐसी बातें हमें ताकत देती थी, बड़ा बनाती थी और लड़ने के लिए तैयार करती थी। सपने देखते थे। उन्होंने
ये जो आपने इंसिडेंट जिसका जिक्र किया, उस हमारे घर में टीवी तो क्या होता है, बट बिजली नहीं थी, तो पड़ोस के घर में टीवी देखने जाते थे। और वापस आया मैं तो उन्होंने अपना दरवाजा अगले दिन बंद कर लिया था। फिल्म उस जमाने में आधी फिल्म सैटरडे को आती थी और बची हुई फिल्म संडे को आती थी। तो आधी देखी थी सैटरडे को, संडे को जब गया वापस आया तो मेरी आंख में आंसू थे। बाबू ने पूछा क्यों, फिर आंसू, तो मैंने कहा उन्होंने टीवी बंद, उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया, मैं देख नहीं पाया, टीवी पर फिल्म देख रहे थे। तब उन्होंने एक सेंटेंस कहा जिसका आपने जिक्र किया, तुम किसी दूसरे के घर में किसी तीसरे को टीवी पर देखने जाते हो, तब मैं तो कुछ ऐसा करो तुम टीवी पर आओ, लोग तुम्हें देखें। वो बात कहीं जहन में अटक गई थी। उस समय मेरी उम्र 10 साल की थी और कई साल बाद ये चमत्कार हुआ। और फॉर्चुनेटली उस समय वो जीवित थे, उन्होंने मुझे टीवी पर आते हुए देखा और उन्हें इस बात की बड़ी खुशी थी कि लोग मुझे अब टीवी पर आते हुए देखते हैं। आपका और एक फैसेट है कि यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड यू हैव कंडक्टेड मोटिवेशनल लेक्चर्स इन मेनी प्लेसेस, जिसका फीडबैक इज आउटस्टैंडिंग. So who are your motivators? Who has motivated you throughout your life in various stages? मुझे ऐसे मोटिवेटर मिले नहीं एक्चुअली, मैं अभी भी ढूंढ रहा हूं कोई मुझे मिले मोटिवेट करने वाले। जो कुछ है मेरी अपनी जिंदगी, अपना स्ट्रगल, अपनी तकलीफ, अपनी भूख, अपनी उसी से मोटिवेशन मिल गया। जो मेरे बाबूजी ने सिखाया, जो हमने अपने घर में संस्कार मिले, बस वही मेरा मोटिवेशन बन गया। और सच कहूं तो जिंदगी में मोटिवेशन सबसे बड़ा ये बना कि इस गरीबी से छुटकारा कैसे पाए, इस भूख से, इस तकलीफ से कैसे निकले, क्या करें। और उसको आप मोटिवेशन भी कह सकते हैं, उसको मजबूरी भी कह सकते हैं। उसी से रास्ता निकले। आज ऐसे सीखने की जहां तक बात है, आपकी अदालत में 1000 से ज्यादा सक्सेसफुल लोग आए हैं और जो भी आपकी अदालत में आता है वो कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। मैंने सलमान खान से भी सीखा, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी से भी सीखा, मैंने मोदी जी से भी सीखा, मैंने बंसीलाल जी से भी सीखा। कितने लोग आए, और क्योंकि ये सब लोग होते अचीवर्स थे, इन्होंने, ये लोग नीचे से आकर ऊपर आकर बड़े बने थे। तो सबसे, और आज भी ये मेरा कुछ मोटिवेशन तो नहीं हुआ, लेकिन मैं सीखता हूँ, सब लोगों से सीखने को मिलता है। एक्चुअली सीखने का सिचुएशन रिमाइंड्स मी, लॉट ऑफ पीपल से अब मीडिया में बहुत डोमिनेशन हो रही है किसी का, ग्रुप्स का, और ये डिजिटाइजेशन का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। बट एक चीज है, डिजिटाइजेशन हैज एम्पावर्ड लॉट ऑफ पीपल। अब लॉट ऑफ पीपल आर देयर, जर्नलिस्ट जो है, सिटीजन जर्नलिस्ट जो है, यूट्यूब में दे आर कमिंग फॉरवर्ड एंड यूट्यूब में दे आर मेकिंग देमसेल्व्स प्रेजेंट। हो सकता है कि देयर इज सम लेवल ऑफ क्रेडिबिलिटी नहीं होगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे विल emerge, but they are all conversing in local languages. They are conversing in Hindi and Tamil and Marathi and Gujarati and Telugu. So there is a flood of local citizens who are coming. So ऐसे नहीं बोल सकता है कि जर्नलिज्म खतरे में है because there is centralization and industries are coming. What is your opinion? अभी तक तो खतरा नहीं दिखाई दिया, देयर इज नो डेंजर एज ऑफ नाउ। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है जो आपने एक अभी सेंटेंस, एक शब्द यूज किया, क्रेडिबिलिटी। मीडिया हैज नो एग्जिस्टेंस इन माय लाइफ इफ इट डज नॉट हैज क्रेडिबिलिटी। एनीवन वर्किंग इन मीडिया कैन नॉट बी सक्सेसफुल if people don't trust what you are saying. And unfortunately, our digital media still lacks trust, credibility. Every day you get a video on your WhatsApp and then you will ask to your friend, is it true? ब्रॉडकास्ट मीडिया के साथ में, टीवी के साथ में अब ये बात नहीं। एक जमाना था टीवी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठते थे, एक जमाना था जब टीवी का जो जर्नलिज्म था उसके ऊपर सवाल उठते थे। बट नाउ लास्ट 10-15 years I would say it has come a long way and लोगों का ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म पर ट्रस्ट, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म पर विश्वास बढ़ा है।
और डिजिटल मीडिया अभी भी लोगों के उस क्रेडिबिलिटी को और विश्वास को कायम नहीं कर पाया, क्योंकि डिजिटल मीडिया में आप नोट करेंगे जो जितना ज्यादा नेगेटिव होता है, जो जितना ज्यादा गाली देता है, उसको उतने ज्यादा हिट्स मिलते हैं, उन हिट्स से उसको पैसा मिलता है। तो एक रेस बन गई है, किसी बड़े आदमी का नाम लो, उसको गाली दो, उसकी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाओ, अपने हिट्स लेने के लिए उससे पैसे कमाओ। जहां पर्पस आपका ये है, जहां पर्पस आपका किसी को गाली देके किसको गाली देंगे? जो सक्सेसफुल। किसको गाली देंगे? जिसको लोग प्यार करते हैं, जिसके बारे में कुछ होगा तो लोग क्यूरियस हो जाते हैं, अरे ये क्या। बहुत दिन से आपको मैं बताऊं, पिछले 2-3 महीने से क्या हो रहा है कि, और ये जो डीप फेक आ गया, ये जो वॉइस आपकी रिकॉर्ड करके उसको मॉड्यूलेट करके आपके वीडियो के ऊपर डाल देते हैं। मेरा एक वीडियो चला रहे हैं बहुत दिन से, जिसमें आई एम सेलिंग मेडिकेशन फॉर डायबिटीज। अब हमने उसको 400 जगह से हटवाया है, हमने यूट्यूब को लिखा है, हमने केस किया है। कभी कोई फेसबुक पर आ जाता है, कभी वो कहीं ट्विटर पर आ जाता है, कभी किसी और हैंडल पर आ जाता है। कल एक जगह में एक लंच पर था, वहां मुझे उस्ताद अफजल अली खान साहब मिले, बहुत पुराना, मैं उनको जानता हूँ, वो एक हमारे रिलेशनशिप है उनके। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब ये वो ये मत करिए, ये डायबिटीज की किसी दवाई का। मुझे इतना दुख हुआ। मैंने कहा खान साहब आप मुझे जानते हैं? मैं जानता हूं, तुम ये नहीं करोगे, मुझे समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैंने अपनी वाइफ से कहा था भाई रजत साहब को फोन करके उनसे पूछो। तो वाइफ ने आपको फोन नहीं किया, उन्होंने कहा कहीं उनको बुरा ना लग जाए। बहुत एफर्ट करने के बाद में उसको वीडियो को हटाया, लेकिन स्टिल देयर। अब ये क्या है, ये क्रेडिबिलिटी नहीं होने से, और फिर इसका नुकसान होता है, इन चीजों का नुकसान हो रहा है। और अभी ये जो डीप फेक आया, इससे तो बिल्कुल ही मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा आप तय करके बता ही नहीं सकते। somebody is using my face, somebody is using my voice and to give a message which I have nothing to do with. So this is the problem with the digital media, so that's why it is not a danger. It will become a danger, or it will become complementary to the broadcast media only when they have credibility, they have trust of it. Which is leading to the next question. See, we have a lot of young students, जिसको now they have very low span of interest. अभी जैसे बोलता है कि ना goldfish span of interest of 8 seconds and 10 seconds is what we are competing with as far as young teenagers are concerned. और एक question में, in fact we have asked our students also. और एक स्टूडेंट ने मुझे मीम भी भेजा, आपके पास आपके साथ में शेयर भी किया है वो मीम, बट आई डोंट वांट टू मेक इट, इट इज अ काइंड ऑफ पर्सनल मीम. आई थॉट द स्टूडेंट शुड ओनली गिव इट, आई शुड गिव इट ओनली ऑन ईमेल. बट एज अपोज टू अदर चैनल्स, एज अपोज टू अदर एंकर्स, और ये चैनल्स में ना कभी कभी 3 विंडो, 4 विंडो, 8 विंडोज, 10 विंडोज, और एक स्टूडेंट ने बोला एक टीवी न्यूज चैनल में 16 विंडोज था, जैसे कि जूम चैनल का होता है ना जैसे. सो ये ऐसे टाइप ऑफ सिचुएशन में, ऐसे टाइप ऑफ फॉर्मेट्स में, हाउ कैन न्यूज चैनल्स, एंड इनफैक्ट ये इन दिस सिचुएशन दे आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हाउ इन योर प्रोग्राम दे कैन सिट एंड वॉच फॉर 45 मिनट्स विदाउट any problem at all. But having 16 channels, 16 windows and 10 windows, it's such a huge problem in trying to keep the attention of young people. Are these news channels, do they understand young people when they are getting into this? And what is your opinion on that? Unfortunately not. Unfortunately, they are doing not for the viewer, they are doing it for themselves. और मैं अपनी टीम से हमेशा ये कहता हूं, आप व्यूअर को वो दिखाओ जो वो देखना चाहता है, और उसकी रीजन मैं अपने एडिटोरियल टीम को हमेशा बताता हूं. 20 साल से हम इंडिया टीवी चला रहे हैं, 30 साल से मैं आपकी अदालत कर रहा हूं, एंड माय ओपिनियन हैज नॉट चेंज्ड. हमारा स्लोगन है शोर कम खबरें ज्यादा. और जब मैं उनको एक्सप्लेन करता हूं, मैं उनसे कहता हूं कि किसी भी आदमी की जिंदगी में सबसे प्रेशियस चीज होती है उसका टाइम. ये टाइम जो चला गया वापस नहीं आ सकता किसी भी इंसान के लिए.
वो टाइम जो अपनी फैमिली के साथ देता, वो टाइम जो अपने काम में लगाता, वो टाइम जो अपने बिजनेस पे लगाता, वो आपको दे रहा है। जो इंसान आपको अपनी जिंदगी की सबसे प्रेशियस चीज दे रहा है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके उस टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। हम कोई ऐसा काम ना करें कि जिसमें उसका वक्त बर्बाद हो। कि जो 16 विंडो, 8 विंडो, 10 विंडोज में बहुत सारे लोगों को बुला लिया, एक विजुअल क्रिएट कर दिया, शोर मचाया, किसी को कुछ समझ नहीं आया। इनिशियल ईयर्स में पीपल वॉच इट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ये क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ ये पब्लिक को हर चीज पर एक ओपिनियन बनाना है। हमारे यहाँ आप जानते हैं कि आप किसी से भी पूछेंगे, वो बताएगा कि विराट कोहली को ये शॉट कैसे खेलना चाहिए था। हम सड़क पे चलते किसी भी आदमी को मिलेंगे, वो बता देगा कि ये मोदी को कैसे देश चलाना चाहिए। हम सड़क पे चलते किसी आदमी को मिलेंगे, वो आपको बता देगा कि आपको पढ़ाना कैसे है। और डॉक्टर विद्या को बताएगा कि सिम्बायोसिस असल में इनको चलाना कैसे चाहिए। वी आर वेरी ओपिनियटेड कंट्री। हम हर चीज पर, और किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उस डॉक्टर को बताते हैं कि डॉक्टर साहब ये दवाई है, इसका ये साइड इफेक्ट है, अब आप बताओगे आगे क्या करना है। और ये गूगल सर्च ने तो और भी लोगों को ये बना दिया, वो लोग समझते हैं। तो हमारी इस प्रॉब्लम का फायदा इन लोगों ने कुछ दिन उठाया। लोगों को लगता है हर चीज पर उनको ओपिनियन, वो चाहिए इस पर ये क्या बोल रहा है, इस पर ये क्या ओपिनियन दे रहा है, इस पर ये क्या ओपिनियन दे रहा है, और लोगों को बट नाउ दैट फ्लेवर हैज गॉन, now that tide has gone down. Not these such programs don't get very many viewers, but they are just continuing because they are there. और noise से कभी कोई फायदा नहीं। Connected to that, in this perspective, self-regulation करके एक चीज है, सब ऑर्गेनाइजेशंस न्यूज मीडिया में वो करना चाहिए, because self-regulation is also an important responsibility. जैसे कि when we say others are expected to follow rules, we are supposed to follow rules ourselves. What is the status of self-regulation in the Indian news industry? I can share this with you. It's a very, very good thing that you asked. I think that every viewer of TV must know this. Every young man who wants to become a journalist should know this. आज के 15-20 साल पहले जब मैंने जैसे कहा कि ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठने लगे थे, लेकिन अब उसको कंट्रोल कौन करे। उस समय आई वॉज पार्ट ऑफ द न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन एंड 7-8 broadcasters got together and we created something called self-regulation. And this body is headed by a retired Supreme Court judge. It has 4 people of public eminence who are independent. And there are 2 editors from by rotation from 2 broadcast centers, news channels, who only assist those people in understanding the complaint. Anyone can complain. Anyone who has a complaint against a news channel can write to that body. It's called News Broadcasters Standards Authority. At present, it is headed by Justice Arjun Sikri, retired Supreme Court judge, very, very respected person. Before that was Justice Ravindran. So, and every news channel is bound to run a ticker line. अगर आपको हमारे से कोई शिकायत है, if you have any complaint with this channel, please write to the NBDA, and this is the NBS's online address. There are times when the judges and the authority member, they take suo motu action. They can they fine the channel, they can ask the channel to run an apology, and run an apology is not that आपने कहीं नीचे छोटा सा एक चला दिया, I'm sorry I did this. They decide 9 o'clock in 16 point bold in full frame, you will run this apology. Initially, there were a lot of cases, but I must say in last 7-8 years, things have improved. Now complaints are less, and the authority has less things to deal with. That has been a very, very positive impact of this. And almost all channels have been fined at some point of time or the other. All channels have been asked to apologize. Only problem in this is all channels are not members of the they don't come under the NBDS. Some channels who are not members of the NBA,
they are independent, that they can do things. Or इसमें problem होती है in one, say in Andhra Pradesh there are two channels. One is a member of the association, the other is not. The one who is member of the association is bound by the rules and regulations. The other who is not, they can show anything. And then against them, the government has to take an action. So this is a dilemma we are facing. We have gone to the government and we have told them that all channels should compulsorily be asked to follow the guidelines issued by the NBDSA. So the deliberations are on, and hopefully in this matter also before the Supreme Court of India, Justice D.Y. Chandrachud has taken note of this. He has asked the Justice Arjun Sikri and Justice Ravindran to give them suggestions how you can make the self-regulation more effective. Only problem Justice Chandrachud found with the self-regulation, he appreciated how the cases have been handled, how the decisions have been taken, and how seriously complaints have been taken. Only problem, its question he had was that this fine of 1 lakh rupees is not enough. And then we told them this was decided 15 years ago, we should have revised it. But now we are going to revise it, we are going to make it stricter. So this is the framework of the self-regulation, and I think it is working very, very effectively. And only thing is that all channels should be under this. Probably then it will be better. Correct, because some channel might see it's ultimately सबको news advertisements चाहिए, सबको commercialize करना चाहिए उनका channels. People want to commercialize the eyeballs. So temptation is always there to get those numbers, which comes to another question. I know in my experience as an advertising agency copywriter, जब मैं बॉम्बे में काम कर रहा था, I'm from basically South. So उनको जो media planners जो advertising agencies में काम करते हैं, they have very little idea about India. जैसे कि outside the English speaking ecosystem, उनको बहुत कम मालूम है. इधर यूपी में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, तमिलनाडु में क्या हो रहा है, आंध्र प्रदेश में क्या हो रहा है, मतलब they have this very narrow way. So this bias is there in the media planners earlier in my experience, which I found. Is it still there? No. See, it has changed. It has changed a lot. Initially, they didn't have access to information about what is happening in Telugu, what is happening in Tamil, what is happening in Andhra, what is happening in Tamil Nadu, what is happening in Karnataka. Now, with this digital medium and a better communication, they are better informed. Earlier, I remember the media planners used to depend only the data released by BARC. Which channel is number 1, which is number 2, which is being watched by women, which is being watched by children, which is being watched by younger people and older people. Now they don't depend only on data. They also depend on their own perception. They also deep dive into other things, the reach. And the number of people who are watching is not enough. Which kind of people are watching it? And regional media, they are very aware. And I would say now, see, Hindi, say for example, earlier there used to be dominance of the English news channels and English newspapers because primarily the media planners had access to English. They were watching only English news channels at home and reading English newspapers. But over the time, they have realized that Hindi news channels put together, the viewership is 138 times compared to all English news channels put together. 138 times. So now the money is being diverted to the Hindi channels. Similarly, they have realized that the impact of the language channels is much more, much deeper. People relate better to them. And these markets for the people who want their products to be to go to the consumers, these markets are unexploited. The city markets have saturated. So that English medium or English broadcast or English newspapers, that way they have lost their shine.
and media planners, they completely understand this now. Which is actually the power of the numbers and market in cultural terms. For instance, हम सब ना we come from a place जो हिंदी एजुकेशन नहीं होता है, बट हम सब हिंदी सीखा हिंदी पिक्चर देख के. मुझे याद है एक पिक्चर दीवार 10 बार देखा हूं. 9 times तक मुझे कुछ नहीं मालूम है, मतलब क्या हो रहा है मालूम नहीं है, बट वी यूज्ड टू सी so many times. और एक एक जंजीर, जब जंजीर देखा अराउंड 11 times. तो फर्स्ट टाइम टू 11th टाइम हमारा हिंदी वोकैबुलरी इतना इंक्रीज हो गया. दैट्स अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, हाउ दिस थिंग्स वर्क एज अ कल्चरल फोर्स. और एक क्वेश्चन है, वन ऑफ द रीजंस व्हाई रीजनल मीडिया लाइक फॉर इंस्टेंस हिंदी, क्यों व्हाई इट वाज नॉट ग्रोइंग दैट मच, आई वुड से इज बिकॉज ऑफ दूरदर्शन इफेक्ट. यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. जैसे वो संस्कृताइज्ड हिंदी होता था दूरदर्शन में, जिसको कोई कुछ मालूम ही नहीं. मतलब आई कैन अंडरस्टैंड हिंदी बीइंग स्पोकन ऑन इंडिया टीवी, मतलब इट्स वेरी फेमिलियर, बट आई कुड नेवर अंडरस्टैंड हिंदी बीइंग स्पोकन इन दूरदर्शन. And that is also another angle to it. So I understand where you're coming from. Actually, I can take credit of changing this. See, Doordarshan was because it was government owned, and it had influence from the All India Radio, and they believed in perfect Hindi. They believed in perfect Urdu. They believed in perfect English. Their pronunciations. तो स्कूल में कॉलेज में पढ़ने वाले भी लोग बहुत अच्छा था. हमको भी, माय ब्रदर वाज अ ब्रॉडकास्टर, ही वाज एन अनाउंसर इन ऑल इंडिया रेडियो, तो उनसे प्रोनाउंसिएशन क्या, किस फूल कहेंगे क्या फूल कहेंगे, एक एक वर्ड को वो डांटते थे. लेकिन जब मैं ब्रॉडकास्ट में आया तो मेरा पहला कंसर्न ये था, क्या मैं लोगों को अपनी बात समझा सकता हूं, और क्या मैं लोगों को उनकी लैंग्वेज में, उनकी भाषा में उनको समझा सकता हूं. और मुझे लगा कि अगर मैं कहूंगा संविधान तो लोगों को कम समझ आएगा, लेकिन मैं कॉन्स्टिट्यूशन कहूंगा तो समझ में आएगा. तो ऐसे वर्ड्स को अगर मैं सरकार कहूंगा तो लोगों को समझ में आ जाएगा, गवर्नमेंट कहूंगा तो भी लोगों को समझ में आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं. लेकिन बहुत सारे शब्द ऐसे जो आप इस्तेमाल करेंगे तो लोग को नहीं समझ आएंगे. तो जब मैंने 1994 में पहला इंडिया का न्यूज बुलेटिन लॉन्च किया, विच वाज कॉल्ड जी न्यूज, जो अब एक फुल फ्लेज्ड चैनल बन गया, तो दैट टाइम आई वाज पार्ट ऑफ द जी ग्रुप. आपकी अदालत के बाद में पहला मेरा वेंचर था टू लॉन्च न्यूज बुलेटिन. इट वाज द फर्स्ट प्राइवेट न्यूज बुलेटिन व्हिच आई स्टार्टेड. और उस समय एक और दिक्कत थी, दिस बुलेटिन वाज बीइंग साइमलकास्ट इन लंदन, because Subhash Chandra, owner of ZTE, that time he had brought an Asia News channel there. So ये simulcast था. तो उसके लिए मुझे वो लंदन के व्यूअर का भी ध्यान में रखना था. तो मैं उसको हिंदी अंग्रेजी मिक्स, तो पहले तो 2-3 हिंदी के अखबारों ने बहुत क्रिटिसाइज किया, एडिटोरियल्स लिखे, ये इंग्लिश इन्होंने क्या शुरू कर दिया, ये कर दिया. फिर मैंने उनसे बात की, मैंने समझा, मैंने कहा आप भी ऐसे लिखो, आपको भी ज्यादा व्यूअर मिलेंगे. हम लैंग्वेज को बैरियर क्यों बनाए, हम लैंग्वेज को कम्युनिकेशन का दोस्त बनाए, और ये हमने किया और इसका फायदा है. इनफैक्ट मुझे याद है, मुझे वो फॉर्मेट, वो जी टीवी का आपका शो, आई हैव सीन दैट शो, आई रिमेंबर वेरी क्लियरली. उसमें ऊपर जो पिंक स्ट्राइप्स था, नीचे भी पिंक स्ट्राइप्स था, वो मुझे अभी भी याद है. सेकंड, अनदर रिलेटेड क्वेश्चन. ज्यादा सर ये लॉट ऑफ दिस मीडिया चैनल्स आर गोइंग कॉर्पोरेट, और कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स आर देयर ओन्ड बाय कॉर्पोरेट्स. अभी दिस इज नॉट एन इशू बिकॉज ओनरशिप हैज टू बी देयर. The corporate ownership is not a dirty word. Of course, from another angle, they say corporate interest is a nice word that people talk about. But where is business interest? Not there. Business interest is fundamental to economics and fundamental to our lives. As India TV, you are one of the few independent businesses. Have you taken a conscious decision that you will not
you will be independent, or is it working as a revenue model? Your opinion on that? There are two aspects of it. One is my own. I, as a matter of habit, I want to be independent. मैंने हमेशा कोशिश की है मैं किसी पर किसी चीज के लिए डिपेंडेंट ना रहूं, चाहे हमारे फाइनेंसेस हैं, चाहे मेरी एडिटोरियल पॉलिसी है, चाहे मेरी थिंकिंग है। और मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट होने में आप लोगों का ट्रस्ट जीत सकते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी रह सकती है अगर आप इंडिपेंडेंट हैं। और अगर आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, अगर लोग आपकी बात का भरोसा नहीं करते, अगर व्यूअर आपकी बात को ट्रस्ट नहीं करता, तो आपको इस प्रोफेशन में रहने की कोई जरूरत नहीं। जहां तक कॉर्पोरेट्स की बात है, मुझे लगता है इसको रोका नहीं जा सकता। अगर कॉर्पोरेट्स के पास पैसा है, कोई न्यूज चैनल अवेलेबल है, कोई ब्रॉडकास्ट मीडियम अवेलेबल है, उसको खरीदेंगे। लेकिन ब्रॉडकास्ट करने के लिए, टीवी चैनल चलाने के लिए, वो कोई भी बड़े से बड़ा इंडस्ट्रिस्ट हो, उसको हायर तो प्रोफेशनल्स को ही करना पड़ेगा। चैनल को चलाएंगे तो प्रोफेशनल्स। अब मुकेश अंबानी और गौतम अडानी अपने चैनल नहीं चलाते, ना वो चला सकते हैं, ना उनके पास टाइम है, ना वो एक्चुअली है, ना उनको इस चीज से कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि वो लोग प्रोफेशनल्स को हैंडओवर करते हैं, वो चला रहे हो। प्रोफेशनल की जिम्मेदारी टू मेक दिस इनटू अ प्रॉफिट सेंटर, तो वो भी बाकी लोगों की तरह है चलाते। अब आप कोई कहेगा उनका कॉर्पोरेट इंटरेस्ट, अगर इन ऐसे लोगों को अपना कॉर्पोरेट इंटरेस्ट दिखाना है, अगर उनको अपनी बात टीवी चैनल्स पर कहनी है, वो बगैर चैनल खरीदे भी कह सकते हैं, क्योंकि वो दे कैन पुट एडवर्टाइजिंग एनी अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजिंग इनटू द चैनल। प्रॉब्लम कहां है वो आपको बता। प्रॉब्लम तब होती है जब हम में से कुछ जर्नलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी से पैसा लेकर चैनल चलाते हैं, वो उन पॉलिटिकल पार्टीज की वॉइस बन जाते हैं। तो यू आर गिविंग एन ओपिनियन इन द गार्ब ऑफ एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। ये सही है कि पब्लिक उसको पहचान जाती है, इट टेक्स अ व्हाइल फॉर द पीपल टू रियलाइज, लेकिन लोग पहचान जाते हैं कि ये किसी का तोता है, ये किसी की आवाज है, किसी के पैसे से चलते हैं, इसलिए कर रहे हैं। और चूंकि उनको फाइनेंस करने वाला कोई और है, तो वो तरह तरह के कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ये हमारे प्रोफेशन के लिए बहुत बड़ा मेनेस है, बहुत बड़ा नुकसान है। मुझे ना कॉर्पोरेट से प्रॉब्लम है, ना मुझे किसी ऐसे लोगों से प्रॉब्लम है जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, वो चलाते हैं। लेकिन जब एक आदमी नाम जर्नलिस्ट का, बातें देश की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो और उनका दिल और उनकी आत्मा जानती है कि उनकी चाबी किसी और के हाथ में, वो चीज है जिसको मैं हमेशा विरोध करता हूं। मुझे लगता है ये नहीं क्या, अगर क्यों करते हैं ये लोग, क्योंकि उनकी एम्बिशन जर्नलिज्म करना नहीं है। उनकी एम्बिशन इस जर्नलिज्म का इस्तेमाल करके कल को राज्यसभा का मेंबर बनना है, कल को लोकसभा के इलेक्शन लड़ना है, फिर वो मिनिस्टर बनना चाहते हैं। ये जब अगर आपकी एम्बिशन है, then you are being unfair to your profession, then you are enemy of the broadcast industry. Thank you so much, sir. In fact, I'm getting a message that this is the time that we got from you, and on behalf of everybody here, in fact, students and audience, like wonderful opportunity for interacting with you. Thank you so much. Afsana, Dr. Majid. Thank you so much for this insightful and wonderful conversation. I thank Sri Rajat Sharma for gracing us with his presence. And thank you so much, Dr. Gopalkrishnan, for conducting such a great session. I invite Dr. Vidya Iravdekar, the Pro-Chancellor, to please say a few words. Ma'am. So thank you, Rajat ji, once again, though my video had to be kept off because I'm actually sitting in our school campus here for some program that I had come, and I was witnessing the wonderful discussions between you and Dr. Sreeram. It was amazing. And with your session, closing the Lit Fest with your session, I think it was like a crescendo, for us. It has been, as I said earlier, also 2 wonderful days of academic literacy, and to have you to close the session is something that we will
carry back these memories. It was almost like being on TV in front of you, with again very bold answers. I liked what you said about self-regulation. Honestly, I wasn't aware of this body that you've created. Justice Sikri teaches at Symbiosis Noida campus, so I know, the kind of person that he is, and Justice Ravindran, who was earlier. So I think you have really created something which the journalists should feel proud of. I think there's something like this should come in the education sector as well, of self-regulation, of so many things that we can do here in the education sector. So I think it's a lot of takeaways for our young budding journalists and even other students from other disciplines from your talk. So once again, I thank you. And I also thank Shweta. Under your leadership this time as a director of the Symbiosis School of Liberal Arts, the 2 days of literary festival went off extremely well, with people like Rajat Sharma, Girish Kuber, Javed Akhtar, Dr. Mashelkar, Usha Uttap, and Ambassador Pawan Verma, and so many others. I can't take names of so many people that actually spoke at various sessions during the last 2 days. Being a virtual and online session, Mr. Sharma, the audience was in plenty, because of the YouTube live and on Zoom and etc. So I think, and we could manage to get people like you. Otherwise, it's so difficult for you all to travel all the way to Pune. But next year, we would like to have you in person for the next year's literary festival. We'll tie up with your office for a date before we finalize our date, so that we have you here in person and have a more interactive session with students. So thank you once again, and good luck, Shweta, for the next year's literary festival. Thank you so much, Thank ma'am, you. for being Thank here. you. Thank you, Rajatji, for gracing this occasion. Thank you, Dr. Sreeram. Thank you so much, Afshan, for being here for this last session. And I would just take a brief moment to sum up the last 2 days, and also thank my team who have worked relentlessly over the last 6 months to bring these 2 days to the audience, as well as for each of our students and faculty and staff. So good evening, everyone. And I must say that the last 2 days have been an absolute intellectual treat and insightful journey into the minds of authors, maestros, thought leaders, professionals, academics, and I think students over the many, many conversations that we have had. We have, I think, been able to live up to the theme of conversations that matter across these engagements. And to sum up the breadth and depth of conversations that were delved into, I would probably need 2 more days. And I'm sure we have all had our treats, and we are looking to move forward to our own Sunday engagements. However, I sincerely request your attention for a couple of more moments so that I can encapsulate as well as thank my team. I mentioned in my inaugural comments yesterday that literature is the expression of a society, and the world today is engaged with these multiple expressions. And therefore some of the core themes that came across include the need to move beyond the defined lines of thought to out-of-the-box lateral thinking and action, or as Dr. Mashelkar put forth, the concepts of pole vaulting and exprovement for a game-changing era of India's growth and development, but with a focus on sustainability, flexibility, and social acceptability. I think similar sentiments were shared in the session with Mr. Girish Kuber and Mr. Kishore Chaukar in conversation with Dr. Hardik on the book Tatayan. Industry and development for inclusive community service and the growth of the nation has been the key motto with the Tata Group. The need for increased cultural inclusivity with a focus on traditional knowledge, community narratives, including food, within an asymmetrical world has been the focus of conversation with Ambassador Verma, Dr. Cairo, Dr. Desi Raju, and Chef Atul. The idea of leveraging culture and heritage for promoting regional economic interests was also one of the themes discussed in this session. An extended ideation on similar lines were taken forth with Jayesh Paranjpe, Kunal Vijayakar, and Chinmay Damle in conversation with Ms. Reshma Rege on the paradoxical impacts of culinary tourism on indigenous identity. Ms. Soumya Roy and Dr. Renu questioned inclusivity by discussing the dilemma and paradox of the ideas of dignity of life and labor by focusing on the lives of waste-picking communities of Deonar. Maestro Usha Uttup in conversation with Srishti Jha, an iconic lyricist and screenwriter Sri Javed Akhtar, in conversation with Dr. Suchetna, focused on the multitude of ideas covering societal inclusion and the power of arts, along with lessons
for young individuals that focused on the importance of determination and dynamism to change with time, hard work, and creative imagination as the baseline for success. Whatever you do it shan se, otherwise don't do it, was a simple message that was shared by Usha Uttupji to the students. And I think that really stayed back with me and definitely with the audience. Technology, language, ethics, and creativity was discussed in the session on artificial intelligence and the future of language with Dr. Razak, Dr. Roshan, and Dr. Kaushik in conversation with Dr. Raman. The panel further discussed the many challenges and opportunities that have emerged with the advent of AI, underscoring the need to educate audience on the capacities and limitations of emerging technologies. Transformation and disruption, factuality, funding, and ethics of power in media were some of the themes discussed in the alternative media and news reportage propagated by News Laundry in the session with Abhinandan Sekhri and Professor Chindu Sridharan. You are my adversary and not my enemy is an important thought for criticality and appreciation that I carry back from this session. A similar thought was presented in this last session and the interaction between Mr. Rajat Sharma and Sreeram Gopalkrishnan with the idea of humility in interaction and a safe space for personals to be presented in a public forum. The role of regional and Hindi media was also discussed for creating public opinion and as a opinion as a cultural force among the masses. I cannot thank my team at SIU and SSLA who have been integral to the success of these 2 days without truly going back to each one of their roles. So I'll take just a couple of more minutes. Borrowing from Mr. Kishore Chaukar today, I am in concurrence with the idea that milestones are achieved and successes depend on not one, but the coming together of a vision, not just for self, but for the community, courage, ethical action, and patience. The vision for a literary festival linked to encouraging students and the larger community to engage with knowledge and information beyond their disciplines, professions, and everyday life was conceived by our Chancellor, Dr. S.V. Mujumdar. Thank you, Sir, Dr. Vidya, and Dr. Raman, for your patience and support while we were putting the SLF together. The courage in action comes from the collaborative efforts of my team members, both from within SSLA and larger SIU family. A huge thank you to Suchetna, Ananya, Gayatri, Damini, Manoranjan, Vasudev, Afshan, and Sulakshna for being the creative brain behind the show and leading from the front. Professor Ananya Datta, I owe you this one. You have been the thread or the sutradhar behind the scenes that has brought this all together. So a huge thank you to you and to Rahi, who I must apologize to for taking away his mama over the weekend and many late evenings these past months. Milind and Yogesh from SSLA and the SIU Tech team, Sachin, Chetan, Yogesh, Abhijit, Amol, and Vilas have been working round the clock to ensure that the broadcast over the 2 days was seamless. Our thanks are also due to Professor Dharmendra Chavan and Wasim Patan from Symbiosis Studios. Shikha, Neetu, Bhavna, and Vaishnavi, what would we do without the participation and audience? So thank you for all your support in reaching out to the community. Madhav sir, Anju, Ranjit, and Sagar, thank you for your support in tying up the loose ends at every moment that we have needed you. The core OC team, Madhav sir, has a joke for you. We believe that if anything goes wrong, the idea is to call Madhav this very instant. You've been on our speed dial for the last 6 months. Thank you constantly for being there. The MCs, moderators, speakers, students, and audience, a heartfelt gratitude to each one of you. While it was SSLA that was putting this event together, your support from across the university was never lacking. Chef Atul, Dr. Hardik, Dr. Reshma, Dr. Sriram, Dr. Renu, Dr. Suchetna, a special thanks to you for leading the panels and making them your own. SLF 23 has truly been an international event with extended support from our international partners. Thank you, Professor Chindu. You have been a great friend and support. I would also like to thank Gelly Roshan, Dr. Abhishek Kaushik, Dr. Muhammad Razak, and Dr. Simon Lynch for their constant support. Dear students, faculty and staff members, and most importantly, the audience, your participation, patience, enthusiasm, and contribution is much appreciated for the immense success or the milestone achievement for this 4th edition of the Symbiosis Literary Festival 23. Finally, the most important names for me are some SSLA students who have contributed behind the scenes
Some names I would like to specifically mention: Aditi, Anushka from the research team, Anya, Nandini, Ahana, Annapurna, Harshita, Mahika, and Suparna from the social media team. I cannot move to a close without thanking my mentor and founding director of SSLA, Dr. Anita Patankar, who currently heads the Symbiosis Center for International Education and has been the guiding hand through the conceptualization, execution, and actual telecast of SLF 24. She always found time to answer my queries and stand by us in moments of crisis. A heartfelt gratitude to you, Anita, from the SLF team and from me on a personal note. We miss you. Thank you, everyone, and I apologize if I have missed out on you. Your support has been invaluable. May I request now for my entire team to please come on camera together for a quick screenshot for the future memory lane. Ma'am, I would request you to please continue there for this one last screenshot. Thank you. Thank you so much, everyone. I think this screenshot is done. Thank you so much, ma'am. Thank you, sir. It's been a wonderful, wonderful experience, ma'am. Thank you for trusting us. Thank you. I look forward to us all coming together for SLF 24 in person next year. And thank you. And I hope SLF has provided the audience with food for thought that you will carry forth. Have a great weekend. Thank you. Good evening and good night. Bye-bye. Thank you, ma'am.